Now, let us see the transport of water. For transport of water, we have seen कहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट करना है, रूट से ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग द टॉप मोस्ट लीव. देयर आर सेवरल ट्रीज, मैनी ट्रीज विच आर सेवरल मीटर इन हाइट. कितने कितने फुट लंबे होते हैं. इफ़ यू इमेजिन अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट करना है टिल द टॉप ऑफ द ट्री. कैसे जाएगा? फ्रॉम द रूट टू द लीव. दिस आई हैव ड्रॉन इज द टीएस ऑफ रूट. जैसे हमने पहले किया था वीएस ऑफ लीव. दिस इज द सेक्शन ऑफ रूट. देखें रूट की कौन सी लेयर्स हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एपिडर्मिस which is in direct contact with the soil, and outermost layer of this root, this epidermis has got what? Root hairs, and these root hairs, they absorb water along with minerals from the soil. ठीक है. Next few layers, 5 to 6 layers inside the root. Next few layers of parenchyma cells, these are called cortex. After cortex there is a layer of barrel, BARREL, barrel shaped cells. barrel क्या होती है? जैसे ढोलक की शेप होती है. This is a single layer. After cortex there is single layer of barrel shaped cells, and these cells are called endodermis. These cells are called endodermis. After endodermis there is another layer of cells, single layer of cells, which is called pericycle. After pericycle there is the vascular bundle, that is the xylem and phloem. These are the xylem, and here there are located phloem. This is phloem. Here phloem is located, phloem and phloem. This is the VS of leaf. VS of leaf, which consists of upper epidermis, a lower epidermis, and in the lower epidermis you can see there are present stomata. They are the pores present in the outermost surface of leaf, meant for gaseous exchange, for exchange of carbon dioxide and oxygen. Then the space between these two was called मीज़ोफिल. और मीज़ोफिल में जो सेल्स थे दो लेयर्स में अरेंज थे. वन वॉज पैलिसेड पैरेनकाइमा, एंड देन विच वेयर द सेल्स वर टाइटली अरेंज्ड, एंड देयर वॉज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा वेयर द सेल्स दे वर लूजली पैक्ड, एंड इन द सेंटर देयर वॉज xylem and phloem. This is the vascular bundle. Now the xylem and phloem of all the organs of plant, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव, सब में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. एंड दीज वेस्कुलर बंडल्स दे आर interconnected by means of xylem, tracheids and vessels. We know xylem and phloem, they are the complex vascular tissue, complex conducting tissue. कैसे? दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स. जाइलम में 4 तरह के सेल कौन से थे? जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेनकाइमा. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. देखो जैसे हमने दिखाया, दिस इज रूट, दिस इज द टॉप मोस्ट लीफ, and the vascular bundles, they are interconnected. This is what? This is the xylem, ट्रैकीड, और ये दोनों के किसको कनेक्ट कर रही है? जाइलम को. ट्रैकीड्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब की तरह पड़ी. नाउ सपोज दिस रूट इज अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. ठीक है. यहाँ पे क्या है? द माउथ ऑफ द पर्सन, एंड द माउथ एंड द ग्लास ऑफ वाटर इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रॉ. ये क्या है? सपोज करो कि रूट क्या है? वो पानी का भरा हुआ एक गिलास है. लीफ क्या है? हमारा माउथ है.
और पानी का गिलास और हमारा माउथ कैसे कनेक्टेड है? हमने बीच में एक स्ट्रॉ रखा है। क्या सिंपली स्ट्रॉ पे मुंह रखने से पानी हमारे मुंह के अंदर आ जाएगा? नहीं। क्यों? वी हैव टू सक द वाटर, वी हैव टू पुल द वाटर। There a force is required, a pressure is required to drink water. In order to drink, we have to suck. Let us see what happens. Soil से इसने root hairs ने water absorb किया. This water is transported to the cortex, next cell. It is absorbed, and ultimately water कहाँ आ गया? In the xylem cells. पानी आ गया xylem में. अब ये ऊपर कैसे जाएगा? लीफ तक. Now water is lost from the stomata, from this interstitial space, and this loss in the form of water vapor, this loss is called transpiration. Loss of water from the surface of the leaf, that is through stomata, in the form of vapor, this process is called transpiration. Now this transpiration it leads to deficiency of water in the adjoining cells. Now this water becomes water deficient, it will absorb water from the neighboring cell, it will absorb water from the neighboring cell, it will absorb water from the neighboring cell, ultimately it will absorb water from the xylem. So this water deficiency is, or the pressure caused because of the water deficiency, is transmitted to the adjoining cells and ultimately to the xylem of leaf. This pressure, this suction pressure, which is also known as transpiration pull, is developed in the vascular bundle of leaf. This transpiration pull is further transmitted to through the xylem tracheids and to this. और यहाँ पे वो जो प्रेशर डेवलप होकर जब यहाँ आता है रूट में, that is called root pressure. Now because of this root pressure and this transpiration pull, the water is pulled up as a continuous column and it is transported to each and every part of the plant, that is to the topmost leaf also. So let us repeat. The water is absorbed by the root of the plant through root hairs. Now it comes to the xylem of the root. From the surface of leaf, water evaporates in the form of vapor to the atmosphere and this is called transpiration. This process is called transpiration. The pressure developed due to the water deficiency is transmitted. It is further given to the neighboring cells and ultimately to the xylem of the leaf. This creates a transpiration pull or the suction pressure in the leaf, and this pull it is further, when it enters into the roots, it becomes root pressure. Now because of this root pressure and transpiration pull, water is pulled up as a continuous column and it enters the leaf of the plant. Now the transpiration, let us see what is the role of transpiration. Transpiration, it helps in absorption of water and minerals from roots to the leaves, and it is considered that जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट. During the daytime when stomata are open, the transpiration pull, it is the major force which helps in movement of water through the xylem. Now